को इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंटेड रेयर पोजीशन पे एलिमेंट को रखेंगे। दिस वाज NQ। empty condition क्या था? Now please have a look. Let me revise empty condition. It is quite interesting. Let us see. Please listen. Acha, in program we will not write if rare is equal to max. What we will write? If rare equal to max minus 1. Correct. Now let us see is empty का condition हमने ऐसे क्यों रखा? मैंने आपको बताया भी था, दो केस थे। See, suppose my front at 1, rare is at 5. Suppose मैंने याद है आपसे कहा था 10, 20, 30, 40, 50. फ्रंट डिलीट होने के बाद इंक्रीमेंट होता है, देखो, ठीक है। तो फ्रंट पे 10 है, वो डिलीट होगा, फ्रंट इंक्रीमेंट होगा, फ्रंट 2 पे आ जाएगा, 2 डिलीट होगा, फ्रंट 3 पे आ जाएगा, 3 पे जो एलिमेंट है 30 वो डिलीट होगा, फ्रंट 4 पे आएगा, 4 पे जो एलिमेंट है 40 वो डिलीट होगा, फ्रंट 5 पे आएगा, 5 पे जो एलिमेंट है 50 वो डिलीट होगा, फ्रंट 6 पे जाएगा। So now front become greater than max. Well, at the same time, front is rare plus 1 because my rare was 5. Correct? So let us see second condition. पहले में मैंने 1 to 5 सारे पोजीशन में एलिमेंट रखा था. Suppose we have element only from position 1 to 3. तो 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30. फ्रंट अभी 1 पे है, डिलीट होगा, फ्रंट आएगा 2 पर, डिलीट होगा, फ्रंट आएगा 3 पर, 3 पे अभी 30 है, वही फ्रंट है, वही रेयर है, वो भी डिलीट होगा, फ्रंट आएगा 4 पर। नाउ अगेन फ्रंट बिकम रेयर प्लस 1। सो हमने ये देखा कि फ्रंट डिलीट करने के बाद आगे जाता है। सो इफ यू रीच टू अ कंडीशन वेयर रेयर प्लस 1 इज फ्रंट, देन वी विल से रिटर्न 1, हाँ क्यू एम्प्टी है, एल्स वी विल से रिटर्न 0, क्यू एम्प्टी नहीं है। एवरीवन गॉट दिस? Everyone got this? Yes, sir. Okay, next. DQ याद है हमने कहा पहले चेक करने का क्यू एम्प्टी है कि नहीं, उसके बाद जो भी फ्रंट पे है वो एलिमेंट को देने का, फिर फ्रंट इंक्रीमेंट करने का। दोनों में फर्क है। रेयर क्या होता है? पहले रेयर इंक्रीमेंट होता है, सी रेयर इंक्रीमेंट हुआ, फिर रेयर पे एलिमेंट आया। DQ में क्या होता है? पहले फ्रंट पे जो है वो एलिमेंट को दो, फिर फ्रंट इंक्रीमेंट करो, एंड देन यू रिटर्न द एलिमेंट। एवरीवन अग्रीड विद DQ? Yes, sir. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट Q फ्रंट। इट इज सिंपल। अगर Q एम्प्टी है तो -1 रिटर्न करने का, नहीं तो जो भी Q में फ्रंट पे है वो रिटर्न करने का, एंड देन डिस्प्ले। Q एम्प्टी है, वी विल रिटर्न अंडरफ्लो, एल्स फ्रंट से रेयर तक डिस्प्ले करना है। वी विल नॉट से 0 टू मैक्स, ये सब हम रखेंगे नहीं। एरे में फ्रंट पोजीशन से रेयर पोजीशन तक जितने भी एलिमेंट है सबको डिस्प्ले करना है। एवरीवन अग्रीड ऑन दिस? Yes, sir. ओके, एंड देन उसके बाद हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये वाला सी करेक्ट, एंड लेट अस फिनिश इट। ये मैंने शायद डिस्कस भी किया था, बट वी विल रिवाइज इट। हमने कहा कि we will implement Q using array. So we have created a structure type def struct array A of size max, मैंने max 10 देके रखा है। Let front and rear be two points that refers to the front end and rear end of the Q. Let us see main. मैंने तुरंत इसके बाद मैंने main आपसे कहा था देखने को। I have created a variable of Q. I have initialized front to 0. In ADT it was 1. I have initialized rear to -1. In ADT it was 0. But since we are going for programming implementation, we will initialize it like this. Let there be a menu-driven infinite while loop, and the only condition to terminate this is user will enter 5, which will cause exit. So 1 for NQ, 2 for DQ, 3 for Q front, 4 for display,
5 for exit, we will ask for choice. If user entered 5, we will break the loop, else. We have already created, see, we have already created Q variable. If I want to Q, then we will write Q1 comma Q2 बराबर ना बेटा? Yes, sir. Here we want operation to be done only on single Q. So only one variable Q. मैंने कहा enter element to NQ. जो element आपको NQ करना है वो element enter करो. Ampersand DLE is the element. I am calling NQ function. I am passing the Q in this Q. Insert ELE. This is case 1. अगर यूजर ने केस 2 लिया है यानी उसे डिलीट करना है, dq फंक्शन कॉल होगा. I am passing the q. From this q, delete the element. From this q. Now मैंने कहा dq. In dq, if the q underflow condition is satisfied, we return -1. So if -1 is there, we will say q underflow, else या तो वो -1 रिटर्न करेगा या तो वो जो फ्रंट पे एलिमेंट है वो डिलीट करके वापस देगा. So that element is ELE. But here we have dequeued the element. It is removed from the queue. That is what the difference is. Because I'm calling queue front, either it will return -1 or it will return the queue front, but element is not dequeued. Queue front is not dequeued. Queue front element is not removed. I hope you can understand the difference between two, DQ and Q front, beta. And then Yes, sir. display this Q. So this main is understood. Let us see function one at a time. NQ function. I am passing address of the Q. So there has to be a Q pointer here. See, these are the element of the Q. A here, A, front and rear are Q element. So चाहे मैं A की बात करूं, चाहे मैं फ्रंट की बात करूं, चाहे मैं रेयर की. So when they are accessed using वेरिएबल, अगर मैं Q के वेरिएबल से एक्सेस करूंगा बेटा कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा? डॉट ऑपरेटर. Dot. यस, तीनों डॉट ऑपरेटर, बट when accessing using pointer, क्या यूज करूंगा बेटा? एरो. Arrow. Yes, sorry, arrow operator. So here we have Q pointer. So जब भी मैं rear access करूंगा, it will be Q arrow rear. So if rear का value max -1 जैसे कि हमने डिसाइड किया था, we will say Q overflow condition. ठीक है, and then we will return. अगर नहीं है, we will increment the rear and in the array incremented rear position पे एलिमेंट को रखने का. कोई दिक्कत? No, sir. पक्का ना बेटा? Yes, sir. Now next is empty. हमने empty का कंडीशन क्या बोला था? अगर rear के फ्रंट डिलीट करते करते rear के आगे निकल गया, if rear plus 1 is front, तो हम -1 रिटर्न करेंगे. हाँ, Q empty है. सॉरी, Q is full नहीं, Q is empty होना चाहिए. मैंने क्या लिखा था? Should be empty. Q is empty. Else Q is not empty. Next, DQ. अगर Q empty है तो रिटर्न -1. else जो भी एरे, देखिए एरे को एक्सेस करूंगा Q एरो ऑपरेटर, फ्रंट को एक्सेस करूंगा यूजिंग Q एरो ऑपरेटर.
जो भी फ्रंट का एलिमेंट एरे में है वो x को देने का, फ्रंट प्लस प्लस करने का। एनी कंफ्यूजन इन DQ बेटा? नो सर। नेक्स्ट Q फ्रंट का एलिमेंट हमको क्या करना है चाहिए, अगर Q एम्प्टी है तो -1 रिटर्न करने का, नहीं तो जो भी फ्रंट पे है। सी हियर अगेन वी हैव नॉट रिमूव द एलिमेंट, वी हैव नॉट रिमूव्ड द Q फ्रंट एलिमेंट। अरे आई डोंट रिकॉल, रिकॉर्डिंग चालू है? नहीं चालू है सर। अच्छा स्टार्ट। नेक्स्ट डिस्प्ले फंक्शन, इफ Q is empty then we will display। यहाँ पे -1 इसलिए नहीं बेटा, because display function is not returning anything ना, तो वो खुद ही मैसेज दे देगा। if Q is empty it will display the message Q underflow and then simple return else। I का वैल्यू फ्रंट से लेके रेयर तक, जैसे मैंने कहा अगर ये मेरा Q है 0 1 2 3 4, suppose we have 10 20 30 40, suppose we have these elements only, so this is rear, this is front। suppose मैंने एक बार DQ कॉल किया, तो DQ कॉल किया, now my front is at which position? 1, correct बेटा? come on। यस सर। now एक बार DQ कॉल करने के बाद अगर अब मैंने डिस्प्ले को कॉल किया तो I का वैल्यू रखेगा फ्रंट। what is front? 1 front। I less than equal to rear, what is rear? 3, front is 1। तो Q में A of 1 पे जो है वो डिस्प्ले करो, 20 डिस्प्ले होगा, I becomes 2। Q में A of 2 पे जो है वो डिस्प्ले करो, 30 डिस्प्ले होगा, I become 3। 3 लेस देन इक्वल टू 3, यस। Q में A of 3 पे जो है वो डिस्प्ले होगा 40। थैंक यू राकेश जी। नेक्स्ट 40 डिस्प्ले होगा, I become 4। 4 less than equal to 3 beta? No. So we have displayed all the element in the queue from front to rear. So 20, 30 and 40 will get displayed। Pakka beta? Koi confusion? नो सर। So this is queue implementation using array। मैंने आपको execution दिखाया था कि नहीं दिखाया था? I don't recall। Let me show you। We will see the execution and then we will start with circular queue, priority queue। आज का हमारा टारगेट एक सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू करेंगे। आई एम प्लानिंग टू कीप एन एक्स्ट्रा लेक्चर। डू यू हैव एनी फ्री सेशन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो? नहीं, डे आफ्टर टुमारो तो आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। टुमारो बेटा कल मॉर्निंग में कुछ चांस है क्या फ्री सेशन के? नहीं सर, 9 से 5 बजे तक, 5:15 बजे तक क्लासेस है। और मैं सच बोलूं, आई एम प्लानिंग टू कीप एक्स्ट्रा लेक्चर ऑन सैटरडे, बट देन आई डोंट वांट टू टॉर्चर यू गाइस हियर। मतलब मेरा टीचर अगर सैटरडे लेक्चर रखता है ना मंडे टू फ्राइडे के बाद, तो मुझको तो बहुत दुख होता। तुमको भी होगा ना? यस सर। बिल्कुल तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। सी देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट आईए सिलेबस। हाँ, अपना आईए में सिर्फ क्यू तक है, वो तो मैं अपना कमिंग मंडे खत्म हो जाएगा। सो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट आईए। मेरा क्या, मेरे को दुख हो रहा है कि मेरा लेक्चर मिस हो गया ना, और दोनों बार कॉम्स का ही हुआ है मेरा। दैट इज द वर्स्ट ट्रेजेडी। चलो कोई बात नहीं, यही जीवन है। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अ न्यू बुक। तुम बुक रीडिंग थोड़ा चालू करो। मेरे को एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, मेरे को थोड़ा वर्टिगो का प्रॉब्लम था, बिकॉज आई वाज रीडिंग। हम रात को मोबाइल बहुत देखते हैं ना, दिस इज द वर्स्ट थिंग। आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग, आई जस्ट फिनिश्ड इकिगाई। आप लोगों ने पढ़ा है बेटा किसी ने? ना तो होगा इकिगाई। मेथड ऑफ हैप्पीनेस वगैरह ऐसा है ना सर कुछ? It's not necessarily about happiness. It's like you should enjoy doing things you do, and it is about story of people in Japan who live more than, well, it is the region where people maximum people live more than 100 years. And then I finished that book. I have some takeaways from that book, and now I've started reading at it Mindset. I just started reading Mindset. Beautiful.
I will recommend everyone to read Mindset. सच में तुमको ना, I just completed 2 chapters and मेरा thought process ही change हो गया यार. It is fantastic book. You can download, you can read it on Kindle, but I always recommend student to have a paperback. As original खरीदो मत. I'm not promoting piracy, but then कुछ नहीं पढ़ने से 100-150 रुपए मिल जाएगा लोकल, वो लेके पढ़ो. बराबर है? See, you should read. Students must read that book. I mean, 100%. चलो, let us go through it. ये हमने मैक्स बनाया बेटा, इसका साइज हम 10 देते हैं, नहीं 5 देते हैं. तो बहुत सारे एलिमेंट एंटर करने पड़ेंगे ना. एनक्यू में देखिए, अगर मैक्स -1 है तो अंडरफ्लो रेयर प्लस इज एम्प्टी. अगर रेयर +1 फ्रंट है तो 1 रिटर्न करो. डीक्यू क्यू फ्रंट, इफ एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न एलिमेंट एट द फ्रंट एंड डिस्प्ले. अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो बोलो, नहीं तो आई फ्रंट से लेके रेयर तक डिस्प्ले कर दो. Can I start the execution? My front is initialized to 0 and rear is initialized to -1. Can I start the execution, dear? Yes, sir. Okay, let me compile it. And let me run it. Okay. So we have 1 for NQ, 2 for DQ, 3 for Q front, 4 for display, and 5 for exit. Let me call DQ first. It should display me underflow. Yes. Let me call Q front underflow. Yes. Let me call display underflow. See, it is menu driven, so it is depending on me when to call. This was not in the case when we were in stack, when we were converting the expression or evaluating the expression or parenthesis, because the push and pop was as per the algorithm and not as per my wish. Let me enter 5 elements in the queue. 1, 10, 1, 20, 1, 30, 1, 40, 50. And if I try to enter any more element, it should display me overflow. See, we got queue overflow. Yes. Okay, let me say queue front. My queue front should be 10 because FIFO mode में काम करता है. So we got 10. Let me display. Had it been stack, my output would have been 50, 40, 30, 20, 10. This being the queue, when I say display, it should give me 10, 20, 30, 40, and 50. Let me call DQ 1 at a time 5 times. 2, 10, 2, 20, 2, 30, 2, 40, 2, 50. And when I call 2 again, means DQ should display me underflow. Is it working, dear? Yes, sir. So this is the perfect program. Correct? Agreed, everyone? Yes, sir. Okay. So this was simple queue. ये queue आपके पास already ये program है. आपको अगर ये मेरे comment वाले चाहिए तो what I will do is I will replace the PDF shared with you. ठीक है? But I don't think so. ऐसा कुछ इतना मैंने नया लिखा है. You can still manage with the earlier PDF because it already contained program. Yes. Sure, sir. And I request you please see what I'm planning to do is next week, the moment I finish the queue now, I will go for a bit revision of the concept. I wish to revise the concepts because हमने कुछ बहुत सारी नई चीजें भी पढ़ी हैं. जैसे हमने prefix देखा, हमने याद है 2 stack in 1 array भी किया है. I know I was taking some time in it, but yes, I love those code. थोड़ा सा ना ऑफ द ट्रैक होके अगर हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, क्योंकि लॉजिक ऐसा ना बेटा, रियल लाइफ में जो भी तुम प्रॉब्लम फेस करोगे, सी रिमेंबर वन थिंग, इन कंपनी और इन द योर वर्क प्लेस यू विल नॉट गेट पेड टू राइट द कोड विच ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन गूगल. These programs already exist in Google. I have made it in a very simple fashion, but somewhere down the line ये सारे प्रोग्राम गूगल पे है कि नहीं? But do you think the company will pay you to write those programs which are already there on Google? No. So there will always be challenges, problems. I will also share. आपका जब I1 हो जाएगा ना, in the meantime आपको linked list का थोड़ा सा idea आएगा. I will share problem based learning experiment with you.
whereby I wish it is like एक experiment एक बच्चा try कर सकता है. It will be like learning and it will be nice. वो कैसे प्रॉब्लम्स है जब जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है ना बेटा, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, जब उनके जॉब इंटरव्यूज होते हैं ना, तो वो डेटा स्ट्रक्चर पे इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं. वो सारे क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे. आप में से हर बच्चे एक एक क्वेश्चन वैसा अटेम्प्ट कर सकता है. ठीक है ना? So let me start today's section. Ideally, okay, lecture 7 DS. Monday was which day? Today is 29, right? So Monday was 27. 27. Now why I'm writing this, I'll tell you. Monday. I will not add anything, but just to keep track. वो मैंने blank ही रख दिया. Lecture 8, just to get me aware कि हमारे कितने हुए हैं. 29 September 2021. Okay, so now we are going to talk about circular queue. Can I start, everyone? Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Circular queue. Circular queue is a type of queue, correct? तो we should know कि अगर हम circular queue पढ़ रहे हैं तो हमारे linear queue में कुछ तो problem होगा. तो linear queue में क्या problem है? चलो देखते हैं. Consider. Now consider we have a queue in this position. 0, 1, 2, 3, 4. This is my front and this is my rear. We have 10, 20, 30, 40 and 50. Let me call DQ 3 times. Let me call DQ 3 times. तो पहले element क्या आएगा? Element will be 10 and then front move to 1. Then and return element ना बेटा. And then element will be 20. Front moves to 2. And we will say return element. And then element will be 30. Return element. मैंने 3 बार DQ call किया. Now this is the current position. Now this is my queue status. After 3 DQ operation, agreed or not? Yes, sir. Ideally, these are now free locations, beta. Now try NQ. Now, if I try NQ, what message I will get? Tell me. Stack overflow. So Q overflow. Now you tell me very frankly, is my queue really overflowed? No. Because अभी 3 पोजीशन खाली है. अरे 3 नहीं, अगर मैंने 4 बार भी DQ बोला होता तो फ्रंट और रेयर पोजीशन 4 पे होते बेटा. Yes, sir. मींस मेरे 5 के क्यू में से 4 पोजीशन खाली है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन कंडीशन कि रेयर इज मैक्स -1, it will check that condition and will give me message of queue overflow even though we have lot many empty spaces in my queue. So tell me, is this correct way of implementing the queue? So you No, sir. this is ये आप समझ गए मेरे कहने का क्या मतलब है बेटा? Now if you Yes. try NQ, we'll get queue overflow message because rare is 4, that is max -1,
but still the queue has 3 empty positions that can be reused. You got the point? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब हम क्यू को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हैं. हम क्या नहीं कर पा रहे बेटा? Effectively use. Yes. तो अब हम चाहते हैं we need to solve the problem. To solve the above problem, we use circular queue. Now try to visualize how the circular queue will look like. Please, everyone here. See, this is my array. This ideally, this is my front and this is my rear. My rear is one position before front. Yes or no? Yes, sir. Yes. My rear is one position before front. If I want to make it behave like circular queue, this is how this array will look like. Let this be 0, let this be 1, let this be 2, let this be 3, let this be 4. Okay. ठीक है, एक और रख देते हैं ना 5. ठीक है, let this be 5. Correct? So यहाँ Yes, sir. तो यहाँ max क्या है? 6. नहीं समझा? समझा सर. अब एक बताइए, सर्कुलर क्यू का मतलब क्या होता है कि लीनियर क्यू में क्या होता है ना बेटा, जब मेरा रेयर 5 पे आता है और मैं रेयर प्लस प्लस करता हूं तो कौन से वैल्यू पे जाता है? 6 पे जाता है. Yes, sir. अच्छा, फ्रंट भी जब डिलीट करते करते वो 5 पे आ जाएगा, उसके बाद मैं प्लस प्लस करूंगा तो भी 6 पे जाएगा. करेक्ट? Yes, sir. हम चाहते हैं Yes. ऐसा ना हो. सर्कुलर क्यू में 5 के बाद वो वापस कहाँ आना चाहिए? 0. 0. Zero अच्छा, पे. now listen. This is my linear queue. This is my circular queue. अच्छा, अगर मैं इस फैशन में देखूं तो सर्कुलर क्यू में फ्रंट का इनिशियल वैल्यू क्या होगा? 0. तो रेयर शुड बी वन पोजीशन बिफोर फ्रंट. रेयर क्या होना चाहिए? 5. 5. Yes, because it has to be in circular nature. So यहाँ पे इनिशियली क्या होता है? इनिशियलाइजेशन लीनियर क्यू में इनिशियलाइजेशन रेयर क्या होता है? -1. फ्रंट क्या होता है? 0. सर्कुलर क्यू का इनिशियलाइजेशन क्या होता है? देखो जरा, कैन यू विजुअलाइज? रेयर क्या होता है? मैक्स -1. फ्रंट क्या होता है? 0. तुम अगर ऐसे देखोगे ना, ऐसे देखोगे तो तुमको तकलीफ होगी. तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया? 0 1 2 3 4 5. तो सर आप ऐसा बोल रहे हो कि ये रेयर का पहले इनिशियल पोजीशन होता है, ये फ्रंट का इनिशियल पोजीशन होता है. बराबर है बेटा. क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, हमने क्या बोला? एनक्यू में पहले इंक्रीमेंट करेंगे रेयर को. बराबर है? तो यहां पे रेयर इंक्रीमेंट होके Yes. -1 से क्या हो जाएगा? 0. यहां पे रेयर इंक्रीमेंट होके 5 से क्या हो जाएगा? 0. वो 0. कैसे होगा वो हम देखेंगे. बट द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ रेयर in circular queue will be 0. So we have initialized rear with max -1. I hope you all are okay with this initialization. Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Okay. So अब एक बात बताइए. चलो,
अब एक बात बताइए, इन सर्कुलर क्यूब, प्लीज बिफोर वी गो विद द प्रोग्राम, इन सर्कुलर क्यूब, ठीक है, अब मुझे बताइए कि पहला हम कौन सा फंक्शन देते हैं, एन क्यू ऑपरेशन। सर्कुलर क्यू का एडीटी नहीं आएगा आपको, तो एन क्यू ऑपरेशन। बेटा लीनियर क्यू में क्या होता था, लीनियर क्यू में, अच्छा ये और एक बात, लीनियर क्यू में फुल कंडीशन क्या होता था, रेयर इज मैक्स माइनस वन, बराबर। यस सर। बट यहाँ पे तो ऐसा जरूरी नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ तो हाँ। रेयर, अभी देखो जस्ट इमेजिन करो, अगर यहाँ पे मैंने दो डिलीशन किया, मतलब फ्रंट 0 1 2 3 4, फ्रंट दो डिलीशन के बाद 2 पे आ जाएगा, रेयर दो इंसर्शन के बाद कहाँ आएगा, 1 पे आ जाएगा, क्योंकि सर्कुलर घूम रहे हैं ना बेटा भाई। रेयर का नेक्स्ट इंसर्शन 0 पे होगा, 0 के बाद वापस 1 पे होगा। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन? यस सर। श्योर, कोई यस कंफ्यूजन सर। नहीं है? यस। सो द पॉइंट इज सर, वो जो एम्प्टी और फुल कंडीशन है ना, वो यहाँ पे बराबर नहीं चलेगा, क्योंकि वी कैन नॉट नाउ जज एम्प्टी और फुल बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द फ्रंट एंड रेयर। So now to do our job easy, what happen in circular queue will say, let count be number of element currently in queue in circular queue, बराबर। समझ में आ रहा है? We will यस use सर। another variable called as count। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। Okay, let us see NQ operation। नॉर्मली हम क्या करते थे NQ में, हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर सी विथ एवरी NQ ऑपरेशन आई विल इंक्रीमेंट काउंट, तो अगर काउंट का वैल्यू इक्वल टू मैक्स हो गया, भाई अगर मेरे एरे का साइज 6 है तो 6 से ज्यादा एलिमेंट तो पक्का नहीं होंगे, फ्रंट कहीं भी होने दो, रेयर कहीं भी होने दो, we cannot accommodate more than 6 element in the queue, that is for sure। Yes sir। Irrespective of the position of front and rear, this is for sure that I cannot accommodate more than 6 element, agreed। so queue full में देखो, अगर count equal to max है तो हम क्या बोलेंगे, queue overflow। नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। else हम क्या बोलते थे, रेयर प्लस प्लस बोलते थे ना बेटा, यहां प्लस प्लस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेयर इज रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स। क्यों बताता हूं तुम्हें, वेट अब जरा ध्यान से सुनना, यही फर्क है। रेयर वुड बी रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स। चलो देखो, प्लीज कंसिडर, और फिर क्यू में रेयर पोजीशन पे एलिमेंट को रख दो। चलो देखो जरा बेटा, ये समझो मेरा क्यू है, सपोज हमने 5 ही साइज रखा। नाउ यू टेल मी, एक काम करते हैं, बाजू में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, विल एक्सप्लेन साइड बाय साइड, वन फंक्शन एट ए टाइम, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, कोड याद रखना जरूरी नहीं है। कंसिडर इनिशियली ये रेयर है बेटा और ये फ्रंट है, बराबर। Now, suppose I perform one increment, R is -1. Now tell me, here देखो, what is new rare का value? What is rare -1?
अच्छा, what is max? 5. Rare is -1 plus 1 mod 5. -1 plus 1 is 0. 0 mod 5 is 0. So new insertion at 0. Agreed? 10. Yes, sir. Again rare. Now rare will be as per this. Now rare is 0. 0 plus 1 mod 5. What is 0 plus 1? 1. 1 mod 5? 1. Rare is at 1. Front is still at 0. We have another element 20. Rare 1. 1 plus 1 mod 5. 1 plus 1 2. 2 mod 5 2. It is as good as linear increment beta. 0 1 2. Agreed? Now Yes, rare. sir. Rare is 2 plus 1 mod 5. 2 plus 1 3. 3 mod 5 3. अरे वाह, ये तो एकदम बढ़िया चल रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे लीनियर इंक्रीमेंट ही चल रहा है. Rare is 3 plus 1 mod 5. 3 plus 1 4. 4 mod 5 4. 40. Rare is 4 plus 1 mod 5. अच्छा, ये 4 आ गया. 50. Rare is at 4. Now rare is at 4. Next वो क्या होना चाहिए? 4 plus 1 5. 5 mod 5 5. 0. 5 mod 5 is 0. 5 ones are 5. Remainder is 0. हाँ. अरे समझा mod? हाँ हाँ. तो देखो 4 के बाद वो वापस कहाँ आ रहा है? 0. So it is incrementing in circular fashion. So the moment end of the array is encountered, it is coming back to initial position. So instead of writing rare plus plus, I am writing rare plus 1 mod max. समझा कि नहीं समझा? समझा सर. कोई confusion किसी बच्चे को? And with every insertion, what we should do is increment the count. कि भाई एक नया एलिमेंट आ गया है. नहीं समझा? Every time I perform enqueue operation, I will increment the count. If my count is equal to max, then my queue will not be able to hold any other element other than this. That's queue overflow. Tell me if there is any problem, please. बोलो बेटा, कहाँ कंफ्यूजन है बताइए मुझे. Yes. No confusion, sir. Okay. So that is an enqueue operation. In circular queue, ये समझ गया ना? प्रोग्राम इज नथिंग यार. अब आ रहा है हमारा दूसरा क्या होता है? is empty फंक्शन. यहाँ is empty का क्या है बोलो? See, with every NQ, I am incrementing the count. With every DQ, what I will be doing? I will be Decrement the count. perfect. So what will be my Q empty condition beta If count is not equal to max. अरे प्रभु, if count is 0, then empty. समझा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Easy. Can we go ahead with next function? Yes, sir. Okay. Now DQ function. DQ function. DQ function. DQ function में सबसे पहले हम empty check करते हैं बेटा. अगर is empty of Q, अगर ये true return करता है तो क्या return करेंगे हम? -1 बराबर है? बराबर है कि नहीं? नहीं तो इसका मतलब Q empty नहीं है. We have to perform decrement. We have to perform deletion. पहले count को decrement कर दो. जो भी Q में फ्रंट पे है वो एलिमेंट को दे दो. और हम क्या बोलते थे? फ्रंट प्लस प्लस बोलते थे. इंस्टेड ऑफ सेइंग फ्रंट प्लस प्लस, व्हाट वी शुड से?
even the front should behave in circular fashion. तो बोलो फ्रंट क्या लिखेंगे? फ्रंट रेयर प्लस 1 mod अरे 5. प्रभु फ्रंट रेयर हो गया ना, रेयर इज ओनली फॉर इंसर्शन ना बेटा, फ्रंट विल आल्सो मूव इन ना, फ्रंट प्लस 1 mod max. सी कंसिडर दिस नाउ, टेल मी प्लीज ध्यान देना, प्लीज कंसिडर step 1. Suppose this is the situation. 10, 20, 30, 40 and 50. Now step 2. After 3 DQ operation. After 3 DQ operation, now what will be the scene? 40 and 50. This is where my front lies and this is where my rear lies. Agreed? Step 3. Now after 2 NQ operation. अब 2 NQ के बाद रेयर अभी नेक्स्ट NQ कहां इंसर्ट करेगा? बताइए कहां इंसर्ट करेगा? यहां पे रेयर आएगा. Yes sir. So it is 40 front 50 40 50 then rear circular आया 60 and 70. So now this is front, this is rear. Can you visualize what is happening? Yes sir. Now tell me, call DQ one time. एक बार DQ बुलाया, क्या हो जाएगा? 60 70 50. This is rear and this is front. नहीं समझा? समझा सर. Now step 6, again call DQ. अब बताओ फ्रंट कहां जाएगा? Now front plus plus नहीं होगा, front is where? 4. Tell me 4 plus 1 5. 5 5 mod 5 0. 0. 0 1 2 3 4. So you know what will happen is, this is 60, this is 70, this is my front and this is my rear. So you got the meaning of this point. Front is front plus 1 mod max. Yes sir. And then every time it is DQ, I am decrementing count and then we will return the element. कोई confusion किसी बच्चे को? In DQ everyone is agreed why front is front plus 1 mod max. Yes sir. पक्का? Yes sir. Okay, now let us see. So this is about DQ function. Now next function is what? Next function is Q front. Q front function. It is very simple. इसमें तो कोई मूवमेंट होता नहीं है फ्रंट का. अगर Q empty है तो -1 रिटर्न कर दो, else क्या रिटर्न करो? Q में जो भी फ्रंट पे है वो रिटर्न कर दो बेटा. इजी, कुछ मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है. पक्का? Yes sir. Now last function, display. I hope you are getting these things. Display function. Display में अगर Q empty है तो हम क्या प्रिंट करेंगे? Q अंडरफ्लो और रिटर्न कर जाएंगे. Else अगर Q empty नहीं है. अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये कंडीशन देखिएगा, कैन यू सी दिस कंडीशन?
Can you see this condition? 60, 70, 40, 50. Yes. Now we will work here. Yes, sir. So suppose 60, 70, 40 and 50. Here we have front and here we have rear. This is only possible in circular queue, not in linear queue. Agreed now? This is Yes, only sir. possible. Okay. अब देखो मुझे बेटा हमने क्या बोला था? हमने कहा था for I equal फ्रंट से चालू करने का, है ना? फ्रंट से रेयर तक डिस्प्ले करने का. This is what we did in linear queue. Yes, sir. Okay. I फ्रंट से चालू होगा. अच्छा, ये मैंने लिया. I समझो फ्रंट से चालू हुआ तो फ्रंट इज 3. ठीक है. और I प्लस प्लस होगा क्या बेटा? क्योंकि I 3 के बाद प्लस होके क्या बनेगा? 4. 4 के बाद प्लस होके क्या बनेगा? 5. We don't want it to be 5 after 4. We want it to be 0 after 4. So should I write I plus plus? No, sir. What should I write? Front plus 1 mod 5. नहीं बच्चा, I plus 1 mod max. I is 3. Yes, right. I is 3. 3 plus 1, 4. 4 mod 5, 4. Then I is 4 plus 1, 5. From 5 mod 5, 0. Yes, sir. समझा? But Yes, अब sir. अच्छा चलो मैंने लिखा I is I plus 1 mod max. Now tell me what will be the terminating condition? I, what should be the terminating condition? बोलो. I not equal to rare should be the terminating condition. अरे समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं. सोचो जरा. I not equal to rare बोला ना बेटा, तो 70 बच जाएगा क्योंकि 70 में I will be one which is equal to rare. Are you getting it? आपको मेरा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? You Yes, cannot write I less than equal to rare because rare is 1 and I starts from front which is 3. 3 less than equal to 1. No. Circular queue में चलेगा नहीं ना. Linear queue में चलता है. You getting my point? So one way of doing it, I should write I not equal to rare and then print Q of I. Q में जो ith position पे element है. चलो देखते हैं. I is front. What is front? I is 3. 3 not equal to rare. 1 yes. ठीक है. Print A of I. तो print Q of 3. Q of 3 print होगा तो क्या print हो गया? 30. I become 3 plus 1 4. 4 mod 5 4. Correct? 4 not equal to rare. Yes. Rare is 1. Check rare is 1. 4 not equal to 1. Yes. Print Q of 4. Q of 4 में आएगा 50. I 4 plus 1 5. 5 mod 5 0. Next I becomes 0. 0 not equal to rare. Yes. Print Q of 0. We got 60. I become 0 plus 1 1. 1 mod 5 1. I become 1. Okay. 1 not equal to rare false. 1 is equal to rare. तो मेरा rare print नहीं हुआ तो for loop के बाहर आके मुझे फिर से print में Q of rare print करना पड़ेगा ना अलग से. नहीं समझ. Yes, sir. तो अब ये 2 बार करने से अच्छा मैं क्या कर सकता हूं? इधर बताओ जरा. इसको मैं while loop से कर दूं. हाँ सर. समझ रहे हैं? क्योंकि ये 2 बार see ये this is not wrong what we are doing, but I don't want you to learn the incorrect way of writing a program.
You should always learn the efficient way of writing a program. तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, जरा बताओ आप। सी यहाँ मतलब अगर हम पहले प्रिंट करें फिर कंडीशन चेक करें तो ज्यादा इजी है। मैं बोलता हूं आई को बोलो फ्रंट, बराबर, करेक्ट। हेलो, Yes, sir. क्या करें बोलो, क्या करें, सोचो जरा, सोचो। कम ऑन यार, सिंपल सा चीज, कौन स्टूडेंट हो तुम, कम ऑन। While front is not equal to a rear. बट फ्रंट नॉट इक्वल टू रेयर, कंडीशन पहले चेक कर लिया तो 70 रह जाएगा। Rare plus 1. सोचो सोचो सोचो, थिंक थिंक, 2 मिनट खाली है। मैं चाहता हूँ यार तुमसे ना उम्मीद करूँ तो किससे करूँ बताओ। ऐसा करे क्या, आई को बोला फ्रंट, अब देखो एक इनफाइनाइट लूप जाने दो, while 1, पहले डिस्प्ले करो, मैंने बोला ना पहले डिस्प्ले करो, प्रिंट क्यू आई, बराबर है, पहले डिस्प्ले करो। अब चेक करो अगर आई का वैल्यू इक्वल टू रेयर है तो ब्रेक करो। मतलब लूप ब्रेक होने का एक ही कंडीशन है, आई बिकम इक्वल टू रेयर, और अगर नहीं तो आई को बोलो i+1 मॉड मैक्स। चेक करो, चलो स्टार्ट। आई इज फ्रंट, व्हाट इज फ्रंट बेटा, 3, कंडीशन इनफाइनाइट लूप है, प्रिंट Q3, क्या प्रिंट हो गया बेटा, 40। चेक करो आई, व्हाट इज रेयर, रेयर इज 1, आई इज 3 इक्वल टू 1, नो, तो आई बिकम 3+1 4 मॉड 5 4, वाइल लूप में वापस जाएगा, आई 4 हो गया है। प्रिंट Q ऑफ आई, विल प्रिंट Q ऑफ 4। व्हाट इज Q ऑफ 4, समझ में आ रहा है ना, 50। Then I is 4. Is it equal to rare? No. Then I become 4 plus 1, 5. 5 mod 5, 0. Again, print Q of 0. What is Q of 0? 60. Print Q of 0. Then I is 0. 0 equal to 1? No. Break. नहीं होगा. I become 1. Because 0 plus 1, 1. 1 mod 5, 1. Print Q of 1. Q of 170. Then check 1 equal to 1, yes, break. So we have displayed all the element. We have just written the code in a smarter way. अरे प्रभु, समझा? Yes, sir. हम क्या कर रहे हैं, पहले प्रिंट कर रहे हैं फिर चेक कर रहे हैं। तो गेटिंग इट, कोई कंफ्यूजन की, देखो फर्स्ट प्रिंट देन चेक। पहले क्या हो रहा था, पहले चेक करते हैं फॉर लूप में फिर प्रिंट करते हैं ना। तो चेक किया तो मालूम पड़ा वो रह रहे, तो प्रिंट हुआ ही नहीं, बाहर आ गया। नहीं समझा, हेलो, Yes, sir. समझा. पक्का ना बेटा, कैन आई गो अहेड? Okay, so let us go ahead with the code. So I hope you understood each and every aspect of the, मतलब कहाँ वेरिएशन है। चलो एक काम करते हैं, पहले वेरिएशन देख लेते हैं। ऑपरेशन एक काम करते हैं, क्या लिखते हैं इधर, ओके, लीनियर क्यूब, सर्कुलर क्यूब, कंपैरिजन,
चलो सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियलाइजेशन। ये हमारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे। लीनियर क्यू में इनिशियलाइजेशन कैसा होता है बेटा? फ्रंट इज 0, रेयर इज -1। सर्कुलर क्यू में फ्रंट इज 0, रेयर इज max -1 and count is 0। बराबर ना? Yes, sir. NQ ऑपरेशन, NQ ऑपरेशन में यहाँ क्या होता है? रेयर प्लस प्लस होता है। यहाँ क्या होता है? रेयर इज रेयर +1 mod max एंड काउंट भी प्लस प्लस होता है। एम्प्टी कंडीशन में यहाँ क्या बोलते हैं बेटा? इफ फ्रंट इज रेयर +1 तो एम्प्टी है। यहाँ क्या बोलते हैं? अगर काउंट इक्वल टू 0 है तो एम्प्टी है। DQ, यहाँ DQ में क्या होता है? फ्रंट इज ओके, फ्रंट प्लस प्लस, DQ में फ्रंट प्लस प्लस होता है। यहाँ क्या होता है? फ्रंट इज फ्रंट +1 mod max होता है एंड एवरी टाइम काउंट डिक्रीमेंट्स। ओवरफ्लो कंडीशन क्या है? यहाँ ओवरफ्लो क्या होता है? रेयर अगर इक्वल टू मैक्स -1 है, यहाँ क्या है? काउंट इक्वल टू मैक्स है तो ओवरफ्लो है। कम ऑन, कोई दिक्कत? No, sir. सारे कंडीशन एकदम समझ रहे हैं आप लोग को? Yes, sir. हमने जितने भी लीनियर और सर्कुलर क्यूब के थे सारे कंडीशंस देख लिए। हमने एक एडीटी भी देख लिया छोटा सा सर्कुलर क्यूब का, सूडो कोड टाइप। कैन वी गो अहेड विद द कोड ऑफ सर्कुलर क्यूब यूजिंग एरे? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So C program to implement circular cube using array। मैं रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, पहले हम रन करते हैं बेटा। ठीक है, ओके, पहले DQ बोलाता हूँ अंडरफ्लो आएगा, क्यू फ्रंट बोलता हूँ अंडरफ्लो आएगा, डिस्प्ले बोलता हूँ अंडरफ्लो आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं। मैंने एक मिनट पहले मेरे को एरे का साइज देखना पड़ेगा, कितना दिया मैंने? 5 है। ओके चलो ठीक है बेटा, मैं ना 10 20 30 40 50 ऐसे 5 एलिमेंट एंटर करता हूँ। प्लीज बी विथ मी। 1 10 1 20 1 30 1 40 1 50। अब अगर मैं इंसर्ट करूंगा वापस तो मेरे को क्या बताएगा? ओवरफ्लो बताएगा, क्योंकि 5 ही पोजीशन है, 10 20 30 40 50 और ऑक्युपाइंग दोस 5 पोजीशंस। यस Yes, Yes, sir.
Now let me perform DQ 3 times. 10 gone, 20 gone, 30 gone. Now DQ is performed 3 times. So basically there are 3 vacant positions. Now in my queue, I only have 40 and 50. So can you visualize where is your front now at 40 and where is your rear now at 50? Do I have to draw that diagram or you can visualize? Just visualize. Q front is at 10, rear is at 50. 3 DQ operation done. So after 3 deletion, now my front is at 40, rear is at 50. Yes or no? Yes, sir. पक्का ना? कोई confusion नहीं? Yes, sir. Now tell me, कि अब अगर मैं NQ बोलूंगा, अगर ये लीनियर क्यू होता तो फुली बोलता मुझे I entered 60. Now tell me this 60 is at which position? 0. Fifth Zero. position. 0, 0, 0. This 60 is at 0 na beta? Because 40, Yes, sir. 50, 40, 50 are at position 3 and 4. Yes, sir. Yes, sir. Pakka na? I'm not drawing it purposely. I want you to visualize. Now let me perform one more NQ 70 जो मैंने किया था. So you know what are we? We are like this. We are like this. Yes. देखो 10, 20, 30, 40, 50 था. मैंने 3 DQ बुलाया तो it is 40, 50. मैंने 2 NQ कॉल किया तो it is 60, 70 here. Yes. Yes, yes, sir. Now if I call display, what should my output be? Come on. 50, 60. 40, 50, 60, 70. Let us check. Perfect. Yes, Yes. sir. Now if I call DQ, 40 should be deleted, then DQ 50, then DQ 60, then DQ 70. Agreed? So my front will also move in Yes. circular fashion. Yes, sir. Check this. On. Perfect. Can we go with the code now? Yes, sir. Yes, sir. Now, see, अगर आपको ये समझा होगा तो you will understand the code. That's why we have given sufficient time to the ADT. Now let's see. Just have a look. Let us go ahead with it. Now circular queue will have additional data member, that is count. काउंट से ना बेटा अपना एम्प्टी और फुल कंडीशन बहुत इजी हो जाता है. बराबर? Yes, sir. बिकॉज अच्छा आपने सर ये स्ट्रक्चर का मेंबर क्यों बनाया? बिकॉज हर सर्कुलर क्यू का एक काउंट होगा ना बेटा. दैट विल कीप ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सर्कुलर क्यू. करेक्ट? Yes. Yes, sir. Now remember, if I want to access array A, front, rear, count, because these are all structure members. If I'm accessing using variable, then use dot operator. Using pointer, arrow operator. Correct? Yes, sir. After structure, let us see main. Main is simple. We have variable of q. देखो मैंने CQ नाम दे दिया बस for circular q. जरूरी नहीं कि आप CQ दे, just for the difference.
front is 0, rear is max minus 1. I hope you all agree to this. Yes, sir. And count is initialized to 0. One for NQ, 2 for DQ, 3 for front, 4 for display, 5 for exit. Enter the choice. If it is 5, then it will be exiting, otherwise loop continue to execute. बाकी linear queue का main है, देखो enter the element, DQ -1 है तो underflow, नहीं तो element. See, the main is same as that of linear queue. Agreed? Yes, sir. Agreed? Yes, Sure. Now let us see the function one at a time. Like the way we discuss in ADT. NQ में इस क्यू में ये एलिमेंट एंटर करो. सबसे पहले क्यू ओवरफ्लो चेक करना पड़ेगा. इफ काउंट इज मैक्स क्यू ओवरफ्लो, एल्स काउंट प्लस प्लस करने का. लीनियर में हम रेयर इंक्रीमेंट करते थे, यहां रेयर विल बी रेयर +1 मॉड मैक्स. एरे में रेयर पोजीशन पे एलिमेंट को देने का. कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. Empty is very simple. Count is 0, yes empty, नहीं तो not empty. Next DQ देखो, अगर Q empty है तो -1, नहीं तो डिक्रीमेंट करो काउंट को. जो भी फ्रंट पे है वो x को दो. फ्रंट को फ्रंट प्लस प्लस मत करो, फ्रंट +1 मॉड मैक्स करो एंड रिटर्न करो x को. श्योर? Yes, sir. नेक्स्ट Q फ्रंट, अगर Q एम्प्टी है तो -1, नहीं तो एरे में जो भी फ्रंट पे है वो रिटर्न करो. वन फंक्शन एट अ टाइम. अग्रीड? Yes, sir. डिस्प्ले, अगर Q एम्प्टी है तो अंडरफ्लो बोलो, नहीं तो याद है मैंने कहा था वाइल, जो मैंने एक्सप्लेन किया, पहले एलिमेंट डिस्प्ले करो फिर कंडीशन चेक करो, और I को बोलो I +1 मॉड मैक्स. अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. We have also seen the execution. Now I want you to write this program on circular queue. Is it fine? Yes, sir. Yes, अरे sir. आपने लीनियर क्यू प्रोग्राम लिखा है क्या? सर वो पीडीएफ आपने दिया है तो हम लोग बाद में घर पे लिख लेंगे. पक्का? हाँ. हाँ, वैसे तो फिर सर्कुलर की भी बाद में लिख सकते हो. You want it to write or you can study it or practice it after the lecture. You tell me. सर टाइम बचेगा अगर बाद में करेंगे तो. टाइम कंस्ट्रेंट है ही नहीं प्रभु, आपका समझना कंस्ट्रेंट है. मैं इधर सिलेबस खत्म करके क्या करूंगा? इट इज लाइक ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड. मेरा पढ़ा के हो गया, तुमको समझा नहीं तो मतलब क्या? यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट? Yes, sir. Understanding. Okay, so then we can go ahead with next queue, that is priority queue. Can we? बोलो भाई. Yes, sir. Correct. Again it is a special queue, priority queue. एक बात बताइएगा, just give me 1 second. एक second. ओके, एक बात बताइए बेटा, जो हमारा सिंपल क्यू होता है वो देखा जाए तो अपने आप में एक प्रायोरिटी क्यू है. क्यों?
जो एलिमेंट फ्रंट पे है वो पहले डिलीट होगा कि नहीं? हेलो, तो देखा जाए तो जो फ्रंट पे उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो रेयर पे उसकी प्रायोरिटी कम है। यस सर। करेक्ट? एवरीवन अग्रीड ऑन दिस यस। कॉन्सेप्ट? ओके, नाउ क्या होता क्या है, ये प्रायोरिटी क्यू क्या है? प्रायोरिटी क्यू इज अ स्पेशल क्यू जहां पे एलिमेंट उनके पोजीशन की वजह से नहीं डिलीट होंगे। सारा खेल डिलीशन में है। एलिमेंट उनके पोजीशन की वजह से नहीं ये होंगे डिलीट, उनकी प्रायोरिटी की वजह से। सी देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इन प्रायोरिटी क्यू द priority of the element is preferred while DQ operation over the FIFO concept। FIFO में क्या होता है? इन FIFO concept जो the element entered Q first will be the highest priority element। जो एलिमेंट क्यू में पहले आया था वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा और इसलिए डिलीट भी पहले होगा, एंड सो विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। ये साधारण जिंदगी है, नॉर्मल फीफो। करेक्ट? यस सर। इन प्रायोरिटी क्यू, इन प्रायोरिटी क्यू ना बेटा, ऐसा जरूरी नहीं जो पहले आया वही पहले जाएगा। यार दी प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट इज असाइंड, हर एलिमेंट को प्रायोरिटी असाइन की जाएगी। तो हमारा अजम्पशन क्या है, हम जो प्रोग्राम करेंगे, आवर अजम्पशन इज लेट द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट बी द प्रायोरिटी। Let the value of the element represents its priority। ठीक है? नाउ प्रायोरिटी क्यू मैं बता तो क्या, डोंट वरी। टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू, टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू में दो है बेटा, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू का मतलब जिस एलिमेंट, मैंने कहा द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट द प्रायोरिटी। करेक्ट? ऐसा हम अजम्पशन मान के पूरा प्रोग्राम करेंगे और आपके सिलेबस में भी यही बोला है। असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू का मतलब द एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू विल हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी। यस सर। सो इसलिए वो पहला डिलीट होगा। यस। असेंडिंग है ना, द एलिमेंट विथ लीस्ट वैल्यू will be of highest priority and hence will be deleted first। डिसेंडिंग उल्टा हो जाएगा, डिसेंडिंग में क्या होगा,
the element with the highest value will be of highest priority. तो अगर मेरा Yes, sir. अगर मेरा क्यू असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू है तो मेरा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू होगा वो डिलीट होगा। लीनियर क्यू में क्या होता है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नहीं होता, जो फ्रंट पे है वो पहले डिलीट होगा। लेकिन अगर वो असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू है तो जो स्मॉलेस्ट होगा वो पहले डिलीट होगा। डिसेंडिंग में द एलिमेंट विथ largest value will be of highest priority and hence will be deleted first। ये दो बेसिक टाइप समझ गया बेटा? Yes, sir. Now हम क्या करेंगे, we will implement, इसका कोई रूल नहीं, मतलब क्यों ऐसा नहीं है, आपकी जो मर्जी वो करो, करना क्या, सॉर्टिंग ही तो करना है। वी विल इम्प्लीमेंट, हम अपने एप्लीकेशन के लिए डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ द पॉइंट इज वी विल इम्प्लीमेंट डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। कैसे? डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू can be implemented in one of the following fashion। पहला हम कहते हैं डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू with normal insert। Now what is this? Please, what is this? अब एक बात बता दो, चलो ध्यान से समझो। लाल बागचा राजा ऑफलाइन दर्शन चालू कर दिया। लाल बागचा राजा में ऑफलाइन दर्शन चालू किया। इधर मंडप है, इधर है, ठीक है, इधर मंडप है, मंडप, और ये क्यू है। मैं सबसे पहले आ गया लाइन में, तो मैं फ्रंट एंड पे आ गया हूँ, फिर दूसरा कोई आया, फिर तीसरा कोई आया, फिर चौथा कोई आया, फिर पांचवा कोई आया, छठा। ये सब रेयर एंड पे जा रहे हैं, ये रेयर एंड है इस समय। अगर ये लीनियर क्यू है तो जो बंदा फ्रंट पे उसको पहले दर्शन मिलेगा नहीं। यस, द पर्सन विल बी डिलीटेड फर्स्ट। Yes. सब कुछ अचानक चल रहा है, सब कुछ लीनियर क्यू चल रहा है। अचानक कौन आया? अचानक कौन आया? अचानक आया मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी हाई प्रायोरिटी है, यस और नो? Yes, sir. तो मुकेश अंबानी आया, मुकेश अंबानी दर्शन करेगा, पहला दर्शन करेगा सबको रोक के। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तक देख, इतना तो पक्का मालूम है कि मुकेश अंबानी का पहला दर्शन होना चाहिए। तो इसके दो तरीके, एक है नॉर्मल इंसर्ट। नॉर्मल इंसर्ट का मतलब इंसर्शन नॉर्मल होगा। इंसर्शन कौन से एंड से होता है बताइए जरा मुझे? Rare end, sir. करेक्ट। इसका मतलब मुकेश अंबानी आएगा और वो क्यू में रेयर एंड पे जाके इंतजार करेगा। अभी समझो आरती चल रहा है, दर्शन चालू नहीं किया है, लाइन बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। अचानक मुकेश अंबानी गया, पुलिस ने बोला सर टेंशन मत लो, आप रेयर एंड पे ही रुको। अगर पुलिस मुकेश अंबानी को रेयर एंड पे ही रोक रही है, इसका मतलब वो नॉर्मल इंसर्शन है। इसका Yes. मतलब इंसर्शन में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। नहीं है। लेकिन आरती खत्म, दर्शन शुरू हो रहा है, पुलिस बोलेगा वेट, नॉर्मल डिलीट नहीं होगा। अब इस क्यू में डिलीट करते समय सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है बोलो? Mukesh Ambani. उसको हम पहला डिलीट करेंगे। यानी अगर हमने इंसर्शन नॉर्मल किया है तो मेहनत कब करना पड़ेगा?
deletion के time. Deletion. During deletion, we will search all the element in the queue and we will delete the element with highest priority first. Now in our case, since we are going for descending priority queue, so during deletion, which value should be deleted first? मुकेश Largest value. हाँ. तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू विथ नॉर्मल इंसर्ट. नॉर्मल इंसर्ट का मतलब मुकेश अंबानी विल कम एंड ही विल स्टे एट द रेयर एंड ऑफ द क्यू. नॉर्मल इंसर्ट. तो जो बंदा लाइन लगा रहा है ना उसको कोई तकलीफ नहीं होगी. बोले कि तुम मुकेश अंबानी हो, अमिताभ बच्चन हो, पीछे खड़े रहो. जो लाइन छोड़ रहे ना वो मेहनत करेंगे. समझा? तो एग्जाम्पल सपोज कंसीडर, ओके एग्जाम्पल कंसीडर मेरा एलिमेंट आ रहा है 5, 8, 3, 7, 6. ठीक है. तो इसको इंसर्शन इज नॉर्मल जैसे हमने कहा. अगर इंसर्शन नॉर्मल होगा तो क्या होगा? क्यू में पहले 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा. ये है मेरा फ्रंट और ये है मेरा रेयर. इंसर्शन नॉर्मल है. सो एनक्यू ऑपरेशन विल बी नॉर्मल. Yes, sir. But DQ operation will take extra effort and search for largest element. Why largest? Because we are descending going, order. Yeah, ascending होता तो Smallest. Yes, very good. We will search for largest element and remove them first. तो ऊपर केस में क्या होता? डिलीशन के बाद 5 अपनी जगह पे रहता, इधर आ जाता 3, इधर आ जाता 7, इधर आ जाता 6. We have removed 8, that was the largest value. So we have not actually removed the front element, we have removed the largest element. So see, we have removed the largest element and everything shifted to left and rear decrements by 1 position. Earlier rear was 4, now is at 3 because we lost 1 element from the queue. Yes, sir. नहीं समझ रहा है? समझा, sir. So when I am saying the DQ operation will not be simple. DQ operation is like, क्या लिखना पड़ेगा? आपने सीपी में एक प्रोग्राम पढ़ा होगा to find the largest element in the array. Yes, sir. Yes? Yes, sir. वो हमको कोड लिखना पड़ेगा, वो हम प्रोग्राम में देखेंगे. बट ये लॉजिक समझ में है. अगर इंसर्शन नॉर्मल है मतलब जो बंदा लाइन में मुकेश अंबानी को खड़ा कर रहा है वो बोलेगा भाई तू रेयर एंड पे जा. डिलीशन जो करेगा ना वो मेहनत करेगा, वो चेक करेगा अरे मुकेश अंबानी है, अमिताभ बच्चन है, मुकेश अंबानी अमिताभ बच्चन खड़े, अचानक कौन आ गया? उद्धव ठाकरे जी. तो अब बताइए हैज प्रायोरिटी कौन है? सीएम ऑफ महाराष्ट्र. Exactly. मतलब at any point of time while deletion, we will check, we will go across all the element in the queue. We will see the CM of Maharashtra, Uddhav Thackeray ji is in the queue. So then he will be removed first. He will be deleted first from that queue and will be given darshan first. I hope you can understand the process. Yes, sir. Correct. So now this is normal insert. Normal insert means no extra effort while insertion. During deletion, extra effort is needed to look for the largest element. Agreed? So this is one way of implementing a descending priority queue.
Another way, descending priority queue with normal what? Normal delete. Now see, here the deletion was not normal, because if the deletion had been normal, we would have removed the element at the front end, which was 5, but we never removed 5. We removed 8 because it was the largest element. So the deletion by no means was normal. It was abnormal. Agreed? Yes, sir. But what second approach says, now my deletion should be normal. Now what do you mean by this? Suppose this is Pandal and there is queue here. This is front end of the queue. This is rear end of the queue. There are people standing in the queue. और कौन आया? Mukesh Ambani. Here arrives Mukesh Ambani. Now deletion वाला बोलता है, देख भाई अभी आरती चल रही है, तू एक काम कर, जो लाइन में लगे ना, तू लाइन लगा ही ऐसा, इंसर्शन नॉर्मल मत कर, तू लाइन इंसर्ट ही ऐसा कर कि बाय डिफॉल्ट जो लार्जेस्ट होगा वो फ्रंट पे होगा, सो दैट लाइन छोड़ते समय मेहनत नहीं करना पड़ेगा अपने को. सो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मुकेश अंबानी विल बी एट द फ्रंट एंड व्हाइल इंसर्शन, बाकी सब पीछे. नहीं समझा? समझा सर. समझा सर. So this is Mukesh Ambani. It means that here while insertion, extra effort must be taken to ensure that the element with highest priority are always at which end, beta? Front end. Very Front good, end. very good, very good. Are always at front end of the queue. तो हमने एफर्ट लिया कि पहले केस में मुकेश अंबानी को बोला भाई तू पीछे खड़े रहे, जब लाइन छोड़ेंगे तो हम मेहनत करेंगे. तो अगर हम ये इंश्योर करते हैं with this the deletion will not need extra effort. बराबर? Yes, sir. Because deletion will be normal. It will be normal as since it will remove the element at front end which is actually the element with highest priority. Correct na beta? Yes, sir. Yes. चलो देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, इससे आपको समझ में आएगा करना क्या है. कंसीडर, समझो मेरे पास एक एलिमेंट आ गया 5 3 8 7 6. सबसे पहले क्या इंसर्ट करेंगे? यहाँ इंसर्शन नॉर्मल नहीं होगा, इंसर्ट 5. तो फ्रंट एंड पे कौन होगा? 5. नेक्स्ट कौन इंसर्ट होगा? 3. तो इधर कौन होगा? 5 and 3. यही फ्रंट है, यही रेयर है. बराबर? Yes, sir. नेक्स्ट इंसर्ट होगा 8. तो बताओ क्या होगा? इट शुड बी 8 5 3 ना, because Yes. effort should be taken while insertion to ensure the largest is at front, and then insert 7. 7 आएगा तो 8 7 8 5. 7 5 3. बिकॉज अगर हम ये रिमूव कर देंगे 8, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो फ्रंट पे आएगा. एंड इफ वी हैव 6, then it should be 8 7 6
5 3 ये फ्रंट है, ये रेयर है. So with every insertion in descending order, with every insertion care must be taken to ensure the queue is sorted in descending order. समझ रहा है? Yes, sir. Why descending order? Because we are implementing descending priority queue. Had it been ascending priority queue, ascending order. Now अभी मुझे बता. Now if I perform deletion operator, which element will be removed first? 8, which is normal. Now deletion will remove 8, largest element, and this will be normal because it is at front. नहीं समझा बेटा? Clear? समझा सर. So Yes, जैसे sir. मैंने कहा, be it ascending order, be it descending order, it can be implemented in two ways: normal insert or normal delete. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, as I said, I intend to take lecture थोड़ा सा आज. मैं normally 11:15, 11:20 तक आपका lecture छोड़ देता हूँ. मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं 11:45 तक lecture लूँ. ठीक है? So I would like to give break of 7 minutes. अभी 10:38 हो रहा है. I want you to take break of 7 minutes. थोड़ा सा पानी वानी पी लो, फ्रेश हो जाओ, and then we will continue with the program because अब मुझे priority queue का program करना है. Is it fine? Yes, sir. Yes, Okay. sir. See, I'm teaching programming. At any point of time, I don't want you to be overburdened. So take आप 5-7 मिनट का ब्रेक ले लीजिए and then we will continue. ठीक है ना बेटा? So please take a break of 7 minutes and then we'll come back. ठीक है? चलो. Please.
ओके, आर वी बैक? यस, सब लोग आ गए वापस? हेलो? Yes, sir. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्यू, करेक्ट? ना अब Yes, sir. अब आप सोचोगे सर इसका एप्लीकेशन क्या है? बेटा आप जब अभी सेमेस्टर 4 में जाओगे ना, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि हम बहुत सारे प्रोसेस शेड्यूल कर देते हैं हमारे सीपीयू को। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मल्टी लेवल क्यू फीडबैक, तो जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस आते हैं और वो क्यू में जाके बैठते हैं। कोई कोई प्रोसेस हाई प्रायोरिटी के होते हैं जिनको पहले करना जरूरी होता है, तो वहां पे इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है? You will understand it, but right now at this point of time imagine कि कोई higher priority process आया है. So let us see a program on priority queue. Priority queue normal insert. First we will see priority queue with normal insert. अच्छा एक बात बताओ, लीनियर क्यू का प्रोग्राम सबको समझ गया है? Yes, sir. तो priority queue with normal insert is same as linear queue with only difference is in DQ function. Yes, sir. हाँ, तो मतलब अगर आपको लीनियर क्यू आता है तो आपको, आई विल नॉट आस्क यू टू राइट प्रोग्राम फॉर प्रायोरिटी क्यू, सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू विथ नॉर्मल इंसर्ट। देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, program is same, exactly same as linear queue, only difference is in DQ function, because in linear queue DQ में जो front पे है उसको delete करता है, in priority queue with normal, this is descending order priority queue, huh? This is again descending order. Only difference is in DQ function as it has to remove the largest element first. तो आप जरा प्रोग्राम देखेंगे ना, इट इज सेम एज लीनियर क्यू। देखो टाइप डेफ स्ट्रक मैक्स फ्रंट रेयर क्यू एन क्यू, अगर रेयर, आई एम गोइंग अहेड प्लीज, अगर रेयर मैक्स -1 है तो ओवरफ्लो, नहीं तो रेयर प्लस प्लस करने का, इंक्रीमेंटेड रेयर पोजीशन पे एलिमेंट को रखने का, एम्प्टी का कंडीशन क्या था बेटा, अगर रेयर +1 इज फ्रंट तो एम्प्टी है, नहीं तो एम्प्टी नहीं है। समझ रहा है ना दोनों फंक्शन? Yes, sir. नेक्स्ट, मैं डिलीट अभी नहीं बात करूंगा, लेट अस सी क्यू फ्रंट, क्योंकि DQ इज डिफरेंट। लेट अस सी क्यू फ्रंट, अगर क्यू एम्प्टी है तो रिटर्न -1, एल्स एरे में फ्रंट पे है जो वो रिटर्न कर दो। डिस्प्ले फंक्शन सेम, एम्प्टी है तो क्यू अंडरफ्लो, नहीं तो फ्रंट से लेके रेयर तक सब डिस्प्ले कर दो, एंड मेन इज सेम, सी फ्रंट इज 0, रेयर -1, 1 फॉर EQ। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। ए प्रोग्राम इज कंप्लीटली सेम, खाली फर्क कहाँ है, ओनली वन फंक्शन इज डिफरेंट एंड दैट इज DQ। DQ. तो वी विल ओनली स्टडी DQ, इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मैंने कहा ना, अगर आपको सी एक सिंपल, अगर आपको लीनियर क्यू आता है तो उसमें काउंट डाल दो, रेयर प्लस प्लस की जगह रेयर +1 मॉड कर दो, फ्रंट प्लस प्लस की जगह फ्रंट +1 मॉड कर दो, वो सर्कुलर क्यू बन गया। Yes, sir. Yes, sir. उसी में DQ चेंज कर दो तो वो प्रायोरिटी क्यू विथ नॉर्मल इंसर्ट बन गया। Yes. उसी Yes, में NQ चेंज कर दो तो प्रायोरिटी क्यू विथ नॉर्मल डिलीट हो गया, नॉर्मल डिलीट। तो एक प्रोग्राम है तो Yes, sir. 4 हो गया ना बेटा। Yes, sir.
Yes, so let us start. Okay, consider, जैसे मैंने कहा यहाँ it is normal insert, normal insert. अगर नॉर्मल इंसर्ट है तो समझो पहले आया 5, फिर आया 6, फिर आया 8, फिर आया 3, फिर आया 1, समझो। तो अगर नॉर्मल इंसर्ट है तो 5, 6, 8, 3, 1, समझो मैक्स 5 है मेरा। कैन वी गो अहेड? Yes, sir. Sure, sir. Okay, this is my front and this is my rear. This is my initial position and I call DQ. And I called DQ. But I want to find the two things. I want to find the largest element. So largest element is 8 at position number 2. Agreed? Largest Yes, sir. element is 8 at position number 2. Now, if that is supposed to be removed, don't you think so 3 and 1 has to get shifted one position to the left? 3 and 1 has to get shifted one position to the left. Yes? Yes, sir. On okay, तो चलो देखते हैं। देखो, अगर Q empty है तो रिटर्न -1, नहीं तो क्या करने का? मैक्स को बोलो एरे में फ्रंट पे जो भी है वो मैक्स। याद है लार्जेस्ट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो पहला एलिमेंट है वही मैक्स। तो यहां क्या बोलेंगे? जो इमेजिन करो जो एरे में फ्रंट पे है वही मैक्स। क्यों? बिकॉज वी हैव टू सर्च फॉर लार्जेस्ट एलिमेंट not from 0 to max but from front to rear. Yes, sir. तो मैक्स इज एरे में फ्रंट। बताओ एरे में फ्रंट पे कौन है? बताओ। 5. 5. And what is position front? What is front? 0. 0. तो इट इज इनिशियल कंडीशन। मुझे DQ कॉल किया, मैंने कहा कि जो पोजीशन 0 का एलिमेंट है 5, इमेजिन करो वही मैक्स है। Now we have to find the position of the largest element. Yes? Yes, sir. तो देखो I कहां से चालू होगा? फ्रंट +1 कब तक जाएगा? रेयर तक। So now what is I? Front +1. Now what is front +1? 0 +1. Now I is 1. Yes, sir. Is A of I greater than max? Is Yes. A of 1 greater than max? What is max? 5. 5. Yes, yes. So new max is A of I, position is I. So what is new max? 6. 6. And what is position? 1. Means now the largest element is 6 at position 1. Agreed? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Now I become 2. What is rare? 4. 2 less than equal to 4? Yes. Is A of 2 greater than max? What is A of 2? 8. Is it greater than 8. max? 6. Yes. Yes. A of 2 is 8, max is 6. So new max is A of 2, that is 8, and position is 2. So now the largest element is at position 2 and the element is 8. Agreed? Yes, sir. Now have a look. Now tell me, I becomes 3. 3. Is A of 3 greater than max? No. No. I become 4. Is A of 4 greater than max? No. No. That's it. I become 5. 5 less than equal to 4? No. No. That's it. Done. So what is final value of Yes. max? 8. 8. Final value of max is 8. But at position? 2. 2. This is so what we have just found. We have found
These effort must be done while deletion, because we have not taken extra care while insertion. So it is normal insert. Agreed? Yes, Now, sir. what we have done, we have found the position of the largest element, that is 2, and the largest element is 8. So this is what we have now. Now we have to shift everything. Left shift Yes, the sir. Q element from position to rear. चेक करो, अभी ये सिचुएशन ऐसा है. 5 6 8 3 1 5 6 8 3 1 0 1 2 3 4. This is my front, this is my rear, and this is the position. Agreed? Yes, sir. देखो, I कहाँ से चालू करो? Position. तो I चालू हुआ position. Position मतलब 2 से. I should be less than rear. What is rear? 4. Okay. क्या बोलता है? A of I पे A of I plus 1 रखो. Means A of 2 पे A of 3 का वैल्यू असाइन करो. तो A of 2 पे, अच्छा, डोंट A of 2 पे A of 3 का वैल्यू आ गया, यानी क्या आ गया? 3 आ गया. Yes, sir. Don't be under impression we have lost 8. No, because the 8 is saved and is safe in variable max. सर, हाँ सर डिलीट करने के टाइम तो हम लोग फ्रंट एंड से ही करते हैं ना, बट बेटा, इसीलिए तो ये स्पेशल क्यों है ना बेटा. मैंने कहा है यहाँ पे डिलीट करते समय हम फ्रंट एंड से डिलीट नहीं करेंगे, हम लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे, उसको डिलीट करेंगे. तो यहाँ जब हम डिलीट करेंगे तो हमारा फ्रंट प्लस प्लस नहीं होगा बेटा, हमारा रेयर माइनस माइनस होगा, बिकॉज वी आर रिमूविंग द लार्जेस्ट एलिमेंट. समझ गए बेटा? यस सर. दिस इज द स्पेशल केस ऑफ अ क्यूब. और इसलिए मैंने कहा था here the FIFO concept is not given importance, rather the priority is given important. Yes? यस सर. Okay, now I A of 2 पे A of 3 आ गया, I become 3, 3 less than 4, yes. तो A of 3 पे A of 4 आ गया, A of 3 3 की जगह आ गया A of 4 1, I become 4, 4 less than 4, no, खत्म. डिक्रीमेंट रेयर, तो Yes, रेयर sir. जो कि 4 पे था, अब रेयर इधर आ गया. सो नाउ व्हाट यू गॉट? 5 6 3 1. रिटर्न मैक्स. मैक्स इज व्हाट? 8. मतलब 8 रिटर्न हो जाएगा, और 8 रिटर्न होने के बाद मेरा जो एरे है उसके एलिमेंट किस पोजीशन में रहेंगे? 5 6 3 1. नहीं समझा? समझा सर. Can I execute the code with the for the same input that we have taken into consideration? श्योर सर. मेरा एलिमेंट क्या था? एक मिनट. 5 6 8 3 1. ओके, लेट अस सी. कंपाइल. 5 6 8 3 1. Okay, and run. Okay, 1 5 1 6 1 8 1 3 1 1. डिस्प्ले कॉल करते हैं. वी हैव 5 6 8 3 1. नॉर्मल इंसर्ट बेटा. यस सर. Now if I call dq to, if it is descending order priority queue with normal insert, how we come to know that it is normal insert? मैंने जिस ऑर्डर में एलिमेंट एंटर किया था वो एलिमेंट क्यू में उसी ऑर्डर में है, 5 6 8 3 1. सो इट इज नॉर्मल इंसर्ट. क्या हो गया? बेटा स्क्रीन बंद हो गया ना?
हाँ सर। यस सर। हाँ, वो क्या हो गया मालूम है, मैं प्लग इन करना भूल गया मेरा लैपटॉप, तो शट डाउन हो गया। जस्ट गिव मी 2 minutes, ठीक है? आई एम कमिंग बैक टू, जस्ट गिव मी 2 minutes, इट विल स्टार्ट एसीपी। मैंने प्लग इन कर भी दिया, इट शुड स्टार्ट नाउ। Okay, my system is back. I hope you can see the screen now. Can you all see the screen now? Yes? Hello? Yes sir. Okay. See, it is normal insert. Why I'm saying so? Because we inserted the element in this order 56831, and when I displayed my queue, it is in the order 56831. Now let me call DQ. If it is a descending order priority queue, which element should be deleted first? 8. So let me call DQ. देखो it deleted 8, right? And Yes sir. if I call display again, check. ऊपर देखो. It is 56831. Now it is 5631. 8 is gone. So it is perfect. Yes sir. So everyone, I hope you understood the program is same as simple queue. The only difference was in which function? DQ. DQ. I hope everyone agreed. The program is okay, understood by everyone. Yes, it is not sir. at all difficult. Can we go ahead with another program? Yes sir. Okay. So let us go ahead with another program which says C program to implement descending priority queue with what? With normal delete. Yes. Yes sir. Here we'll have the code. Normal delete. The program will be same as linear queue. The only difference will be in which function, you tell me?
EQ, NQ. NQ, NQ. यहाँ DQ देखो नॉर्मल है. If empty return -1, जो भी फ्रंट पे है वो x को दो, फ्रंट प्लस प्लस करो. ठीक है, इट इज नॉर्मल. DQ इज नॉर्मल. Q front is check, Yes, normal. Display is normal from front to rear. Main is normal. Front is 0, rear is -1. See, this is the trick. अगर एक आता है तो फिर आगे सब आ जाएंगे. Program is same as simple linear queue. The only difference is in NQ function as it as कि जब भी कोई इंसर्शन होगा उसको इस बात का ध्यान रखना है कि उस इंसर्शन के बाद, हर इंसर्शन के बाद जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो फ्रंट पे रहे. इस बात को उसको ध्यान रखना पड़ेगा. एज इट हैज टू इंश्योर that after every insertion the largest element is at the front. Agreed or not? agreed, sir. Okay, chalo, let us see NQ. Let us see this NQ function. बाकी तो सब same है. So we will work on NQ function. यहाँ तक. चलो, let us see. मैंने कहा कंसिडर, हमने क्या बोला था? 5, 6, 8, 3, 9. कंसिडर. सपोज ये ऑर्डर है, समझा? 5, 6, 8, 3, 9. स्टार्ट. Is rear max -1 तो Q overflow, that we all agreed. Else. अभी समझो पहला इंसर्शन. पहले इंसर्शन में क्या होगा? ये रहा rear और ये रहा फ्रंट. 0, 1, 2, 3 and 4. ठीक है. देखो, सबसे पहले क्या करना है कि सर्च आई फ्रंट से लेके रेयर तक. आई वांट टू फाइंड कि भाई ये जो मैं एलिमेंट एंटर करने जा रहा हूं, उससे बड़ा कोई एलिमेंट है क्या? चलो एक काम करते हैं. 5, 6 ऑलरेडी समझो इंसर्टेड है. 6, 5 समझे आप? इनिशियल से भी मैं बता सकता हूं, बट आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले ये समझ लीजिए कि 6 और 5 ऑलरेडी है और 8 आ रहा है. समझे? Yes, sir. Just imagine there is 6, 5 and 8 is coming. Now what is element? Element is 8. Yes, check. I front. What is front? Okay, so rear will be what? Rear will be here. I is front. Front matlab 0. Rear. What is rear? 1. Is element. What is element? 8. Is 8 greater than A of I? I is 0, यानी front. Element greater than A of 0. Yes, Yes. ना? तो अब सब कुछ राइट शिफ्ट करो. We have to shift right. Agreed? देखो, rear. Yes, sir. Start from rear. तो J is rear. What is J? 1. J greater than equal to I. What is I? 0. J greater than equal to 0. Yes. तो क्या बोल रहा है?
j+1 पे j का वैल्यू रखो। तो j+1 मतलब a(2) पे a(1) का वैल्यू रखो। तो यहाँ पे 5 आ गया बेटा। मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ ना, शिफ्ट राइट। यस सर। देखो राइट शिफ्ट करो, j पे j+1 पे j का वैल्यू है j माइनस माइनस। नाउ j बिकम 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। तो a ऑफ j+1, 0+1 1 पे हेलो, यस सर। ओके। यहाँ पे देखो ना, तो मैं राइट शिफ्ट करूँ, यहाँ पे 6 आ गया। देन j माइनस माइनस, j नाउ बिकम -1, 0 था ना बेटा। इज -1 ग्रेटर देन इक्वल टू i, i is 0, नो। तो a ऑफ i, व्हाट इज i? 0 पे एलिमेंट रख दो। तो a ऑफ 0 पे एलिमेंट आएगा यानी 8 आएगा। सी यहाँ पे 8 आ गया, तो इट इज 8 6 5। समझा? हेलो, अब समझो, सर वो वापस आ जे गया वेरिएबल का। बेटा। जे वेरिएबल क्या करता है पहले, ओके काम करता हूं मैं, तुम्हें अलग पेज पे समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन, ये यहाँ पे देखते हैं। इमेजिन करो ये आपका क्यू है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और 8 आ रहा है। ठीक है, 8 आ रहा यस है। सर। एलिमेंट कौन है? 8। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ठीक है 8 आ रहा है। अब चेक करो, आई कहाँ से चालू होगा? फ्रंट, ये फ्रंट है बेटा और ये रेयर है। आई फ्रंट से चलूंगा यानी 0 से। मैं सबसे पहले चेक करूंगा, इज एलिमेंट ग्रेटर देन ए ऑफ 0? क्या जो 8 है वो पहले ही एलिमेंट से बड़ा है? हाँ, इसका मतलब ये तीनों को राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। यस सर। अगर ऐसा होता 10 9 5 4, ध्यान देना, और एलिमेंट इज 8, चेक, आई इज 0, इज एलिमेंट ग्रेटर देन 0? नो। नो। I become 1. Is element greater than a of 1? नो। No. I become 2. Is element greater than a of 2? Yes. यस। इसका मतलब अब 2 3 के जो एलिमेंट है, यानी I कहां पे आके रुक गया? 2 पे। समझ गए? यस यानी सर। J यस। कहां से चालू होगा? 3। J विल बी, देखो कहां से चालू, प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट। हमने क्या कहा? J कहां से चालू हो रहा है? सी, रेयर से ना। क्यों? सुनो जरा। यस सर। यस। देखो बेटा, मेरा जो आई है वो 2 पे आके रुक गया है। इस पोजीशन का जो एलिमेंट है वो मेरे एलिमेंट से छोटा है, यानी एक्चुअली अब 8 आएगा तो 9 पोजीशन पे आएगा। यस, सेकंड पोजीशन पे आएगा। यस। हाँ सॉरी सॉरी, 2 पे आएगा। तो हाँ। J स्टार्ट फ्रॉम रेयर। रेयर मतलब ये रेयर है ना, 3 से। हाँ। J इज रेयर 3। तो A ऑफ J+1 यानी 4 पे A ऑफ 3 का वैल्यू आएगा। तो A ऑफ 4 पे A ऑफ 3 का वैल्यू आ गया, इधर आ गया 4। यस सर। यस। J बिकम 2। J माइनस माइनस ना, 4 पे 3 का आ गया, 3 पे 2 का आएगा ना। यस सर। अच्छा, एंड वी हैव टू टेक केयर कि I के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि I तक ही शिफ्ट करना है। I के जो पहले एलिमेंट है वो बड़े हैं ना बेटा। यस सर। तो J इज 2, J+1 3 पे 2 का वैल्यू आएगा, ये 5 आ गया। J माइनस माइनस, J बिकम 1, इज 1, नहीं J इज 2 ना, हाँ 3 पे 2 का वैल्यू हो गया तो J 2 हो गया, बराबर। यस सर। यस।
अब इसके बाद मेरे को कुछ करना, इज 2 ग्रेटर देन 2 यानी आई नो। तो a ऑफ i यानी 2 पे एलिमेंट रख दो यानी 8, तो इधर आ गया 8, तो 10 9 8 5 4। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। सी देखो, j रेयर से चालू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू i तक जाएगा, j क्योंकि राइट शिफ्ट कर रहा हूं। राइट शिफ्ट में क्या होता है बेटा, देखो 10 11 12 राइट शिफ्ट करना है, यानी 3 पे 2 का वैल्यू आएगा, यानी j+1 पे j का वैल्यू आएगा। यस सर। और ये कब तक जाएगा, i तक। देखो ना, j ग्रेटर देन इक्वल टू i, और i पे कौन आ जाएगा, एलिमेंट। नहीं समझ रहा है क्या? समझ रहे सर। और अच्छा बेटा, एक एलिमेंट इंसर्ट हुआ है तो मेरा रेयर इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। यस। सी now earlier rare was at position number 3, now rare should be incremented to point it at position number 4। नहीं समझा? समझा सर। so let me execute it। हम एलिमेंट एंटर करेंगे 10 9 5 4 10 9 5 4 8। let us see, execute, compile। One 10 1 9 1 5 1 8। अच्छा ओके 8 4 और 10 9 मैंने 8 बाद में डाला था, लेकिन वो 9 के बाद आ गया कि नहीं? हाँ सर। So now if I perform DQ, 10 will be removed first. It is descending order queue with normal delete। इन डिलीट। नहीं समझा? आई थिंक दिस वाज बिट डिफिकल्ट शायद तुमको। ये इंसर्शन में समझा मेहनत बेटा, राइट शिफ्ट करना है। डिलीशन में क्या होता है ना हाँ। बेटा, एलिमेंट निकालना है तो लेफ्ट शिफ्ट करने का। लेफ्ट शिफ्ट मतलब j पे j+1 का वैल्यू आएगा, 3 पे 4 का वैल्यू आएगा, 4 पे 5 का वैल्यू आएगा। जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो 5 पे 4 का वैल्यू आ रहा है, यानी j+1 पे j का वैल्यू आ रहा है। नहीं समझा? एनीवन समझा कंफ्यूज? सर। इट इज ये प्रोग्राम इज नॉर्मल, आपने किया होगा ये सी में। बट अरे आप लोग सर को सॉर्टिंग इतना ऑफ एरर्स किया था। सॉर्टिंग, बट ये सॉर्टिंग नहीं है बेटा, शिफ्टिंग है। यस सर। I hope this program is okay with you. The only effort that you need to take care is while performing NQ, nothing else. Should I explain Yes, this? sir. And should I explain this NQ again? हाँ। Okay. Let us talk only about NQ function. ठीक है? Let us go step by step. ठीक है? Suppose this is the scene. Suppose we have 10 9 5 4. This is my rear and this is my front. 0 1 2 3 and next element to be inserted is 8. Is it clear? ये पोजीशन सबको समझ में आ रहा है? यस। यस सर। ओके ओके स्टार्ट। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कहां से शिफ्ट करना है। तो मुझे पता है 8 कहां आना चाहिए, 2 पे। 8 2 पे आना चाहिए, यानी 2 3 शिफ्ट होना चाहिए राइट में। क्लियर? हाँ। तो मैंने देखो क्या लिखा, सर्च पोजीशन जहां तक शिफ्ट करना है। मींस हमको ऐसा पोजीशन चाहिए जहां पे जो क्यू का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट से छोटा होना चाहिए।
क्योंकि देखो 10 एलिमेंट से छोटा है नहीं, 9 नहीं, 5 यस, यानी ये 8 5 की जगह पे आएगा और 5 और 4 राइट शिफ्ट होगा। यस सर। चलो तो आई को बोला, देखो आई को बोला फ्रंट, तो आई को बोला फ्रंट, व्हाट इज फ्रंट? 0। आई लेस देन इक्वल टू रेयर, व्हाट इज रेयर? 3। स्टार्ट। is element which is 8 greater than, okay, greater than a of 0 because front is 0? No. नो। Is, okay, then I plus plus I become 1. Is element greater than a of 1? नो। No. I plus I become, बोलो बेटा, 2. 2। Is element greater than a of 2? यस। Means we found the position जहां पे एलिमेंट आएगा। Are you getting it? यस सर। See, we found position जहां एलिमेंट को रखना है, that is at position I जहां रुका वहां पे I का पोजीशन क्या है? 2. So here 8 should be placed. यहां तक समझा? यस सर। Yes, sir. So what is the logic of this code? Search me the position where the new element will be placed. See, अगर ये जो नया वैल्यू है, ये पुराने सारे वैल्यू से कम होता तो एलिमेंट का वैल्यू 4 आता। Is a of 0 greater than is a of 0 less than element? No. Is a of 1 less than element? No. Is a of 2 less than element? No. Is a of 3 less than element? No. फिर 4 पे ही जाता ना। हाँ सर। Yes, So sir. यहाँ तक का कोड समझा? यस। 10, 9, Yes, sir. 5. So what we have found is this. Please have a look. 10, 9, 5, 4, 0, 1, 2, 3, 4. This is my front. This is my rear. And this is what? I. यहाँ तक मिल गया ना? हाँ। तो आयत we want to place now. We want to place element at position I. So till position to from rear till position I, rear से चालू करो, position I तक shift everything to right. नहीं समझा? समझा। रेयर पे जो है वो राइट शिफ्ट करो। देखो J स्टार्ट्स फ्रॉम रेयर, तो J इज रेयर। व्हाट इज रेयर? 3. J greater than equal to I, that is 2. Yes. तो क्या करो? A of J plus 1. What is J? 3। Okay. A of J plus 1 पे A of J रखो, तो A of J is 3, तो J plus 1 is 4. 4 पे 3 का वैल्यू रखो। अरे प्रभु, राइट शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? यस सर। यस। अब J minus minus, J now become 2. Is 2 greater than equal to I, which is 2? Yes. यस। तो A of 2 plus 1 पे A of 2 रखो, यानी A of 3 पे A of 2 रखो। तो A of 3 पे कौन है? 4, उस पे 2 रखो, कौन आएगा? 5। 5. J minus minus, J become 1. Is it greater than equal to 2? No. नो।
Khatam. Yes. I is at position 2. A of I पे एलिमेंट रखो 8 रख दो एंड रेयर को बोलो because rare earlier was at 3, now it should be at 4. I mean I think we have given enough credit to it. You should understand by now, beta. Yes, sir. It Understood. was very simple operation of shifting the element to right, nothing else. हमने कोई rocket science नहीं लगाया इसमें. It was very simple program. समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. समझा. Consider only NQ function of previous program. ठीक है? पक्का समझ में आया? Yes, sir. There is Yes. only one topic of Q is left, that is double-ended Q. But मैं आज नहीं करूँगा क्योंकि आज काफी प्रोग्राम कर लिया हमने. I don't want to overburden you. Is it fine? You all are okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let me stop recording. We have done fair bit of code today. In fact, the next session we will finish that double-ended Q and we will start with the linked list. It will be Monday itself.